Welcome students. Wish you all a very good morning. So today we shall discuss the addition or composition of vectors. Okay? Addition and composition are the same process. So what is composition of vectors? Mo define karibi, mo lekhibi, definition kahibi ta mane taku note down karibo. Okay? जहाँ बुझेगार अच्छे तो बुझे है ना. So first composition of vectors. So what do we mean by the composition of vectors? हमें composition of vector कहले कौन बुझू ठीक अच्छे ताले मु डिफाइन करছি सुनो. It is the process of finding resultant of two or more vectors. So composition বা addition କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଆମେ resultant ବା ଫଳାଫଳ ଭେକ୍ଟର ପାଇପାରୁ କେମିତି ନା ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକା ଭେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିକି ଠିକ ଅଛି. So this is the vector composition is the process of finding resultant of two or more vectors. Okay. When two or more vectors get added, second point mu kochi, when two or more vectors get added, then the result is a new vector. The vectors added are called components, and the vector in the outcome, in the product, is called resultant. बुझिपारलो ताले जो वेक्टर माने आड हे की रिजल्टेंट दियंती से मानू कंपोनेंट कह जाए. से माने आड हैला पर जो वेक्टरटा फलाफल रे बाहरे सेटा होची ताको ना होची कोन रिजल्टेंट. ठीक अछि मु आउथरे कहूची, आई एम रिपीटिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग resultant of two or more vectors. यह गोटे प्रोसेस जोथरे दुई किबा अधिक वेक्टर मानकर resultant बाहरी परिबो हैला. When two or more vectors get added, then as a result a new vector is formed. That new vector is called a resultant. Okay, बुझौची. जो वेक्टर मैंने ऐड होचंती, the vectors added are called components. Okay. So next point, it is a geometric process. So vector addition is a geometric process because here addition depends upon angle between two vectors. Very important. It is not an algebraic process, rather it is a geometric process in which resultant depends upon the angle between two vectors. That means for two vectors A and B, dita vector A और B पाई resultant किछि भी है पारियो जोटा कि डिपेंड करे थीटा ऊपर. बुझी पारछो. For two vectors A and B, dita vector A और B by resultant are called तकया A plus B. ठीक है. So एमाने हेले कंपोनेंट, ये हेला रिजल्टेंट. आउ थरे जो वेक्टर माने ऐड होचंती से मानू कंपोनेंट कहते हैं. माने ए गोटे कंपोनेंट, बी गोटे कंपोनेंट, जोटा रिजल्ट तैयारी होची सेटा होची रिजल्टेंट. सो हमें ताको आर वेक्टर भाव रे रिप्रेजेंट करिछे. सो एटा गोटे ज्योमेट्रिक प्रोसेस कारण एठी रिजल्टेंटटा ए और बी भितर थिबा एंगल ऊपर डिपेंड करे. फॉर एग्जांपल इफ थीटा जोटा कौन कह जाए ना एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. If theta
is equal to inverted comma not that chalo. If theta equal to 0 degree, then magnitude of resultant is equal to A magnitude plus B magnitude. If theta equal to 90 degree, then magnitude of R equal to under root A magnitude square plus B magnitude square. हला एटा होची maximum. If theta equal to 180 degree, then magnitude of resultant is equal to A magnitude minus B magnitude, जोटा कि होची minimum. जानी परछो एडी थीटा रो भिन्न भिन्न वैल्यू पई रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड मध्य भिन्न भिन्न होची, जानी होची. तेणु एठी रिजल्टेंट रो वैल्यू डिपेंड करे थीटा रो वैल्यू ऊपर. तामाने थीटा डिपेंडेंट जेहेतु थीटा गोटे एंगल गोटे ज्योमेट्रिक टर्म सेही पई ए प्रोसेस टाको बा सेही एडिशन प्रोसेस टाको अलजेब्रिक एडिशन नो ज्योमेट्रिक एडिशन कहा जाए. क्लियर बुझौची ना नहीं. आउ गोटे एग्जांपल दोची. फॉर एग्जांपल जदि ए और बी इटा स्केलर हेबे फॉर A and B, two scalars. If A equal to 3, B equal to 4, then A plus B equal to 3 plus 4 equal to 7. But for two vectors A and B, if magnitude of A equal to 4, magnitude of B equal to 3, then magnitude of R, which is whole magnitude of A plus B, is equal to 7. Not always. Hello? That means if theta equal to 90, then magnitude of R equal to A vector plus B vector whole magnitude equal to 5. केमती देखो सपोज एटा A यार मैग्नीट्यूड होची 4, एटा सपोज B यार मैग्नीट्यूड होची 3, ताले एटा जदि R तालता मैग्नीट्यूड केते हबो समकोणी त्रिभुज रे 4 रो स्क्वायर युक्त 3 रो स्क्वायर रो स्क्वायर रूट केते 5. जानि परछो सपोज एटा थीटा, एटा ए वेक्टर, एटा बी वेक्टर, एटा थीटा. ओके जानि परछो एग्जांपल माध्यम देली कोन देखो ना जदी ए और बी दिटा स्केलर हेथिबे ए रो वैल्यू 3 बी रो वैल्यू 4 हेथिबो ताले सबु बेले a plus b that is 3 plus 4 equal to 7 always सबु बेले 7 ही हबो आ कुछ हे परिबो आ जहा भूल हो. किंतु सेही जगह जदी a और b दिटा वेक्टर मुनिए जोठी a रो मैग्नीट्यूड 4 b रो मैग्नीट्यूड 3 सेठी रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड सबु बेले 7 होने हमें कहि परिवानी नॉट ऑलवेज 7. ओके ताले कोन हो परिबो दैट मींस जदी थीटा 90 हे जाए ताले सेही दुई जणकर रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड 7 बदल रे 5 हे जीव. चित्र देखो तमे चित्र रे जानि परछो
तो देटा मु रिजल्टेंट नहीं ताले समकोण त्रिभुज रे कर्ण कोण हो बेस रो स्क्वायर प्लस हाइट माने जो परपेंडिकुलर रो स्क्वायर रूट हो हाइपोटेन्यूस ओके जानि परछो ना नहीं ता माने दुईटी वेक्टर रिजल्टेंट कहा ऊपर डिपेंड कला थीटा ऊपर थीटा रो डिफरेंट वैल्यू पाई रिजल्टेंट मध्ये डिफरेंट हबो सो इट इज नॉट एन अलजेब्रिक एडिशन इट इज ए ज्योमेट्रिक एडिशन माइंड इट ओके ताले हम कंक्लूजन कोन ड्रा करबिया तमे जो डेफिनेशन लिखियो तापर जोडा देइछ तब नोट डाउन करियो नोट करिके मते छाड़िबो ग्रुप ये रे देखिबी हां ताले कंक्लूजन हम कोन ड्रा करले सेटा नेक्स्ट पॉइंट रे लिखिबा ना रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड जोटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड सी कौन करे ना लाए करे ता वैल्यू टा का भीतर रहे ना ए माइनस बी रु ए प्लस बी पर्यंत बुझी पारुछ एटा मैक्सिमम वैल्यू एटा मिनिमम वैल्यू यदि खाली ए भी लिखछि माने एटा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड खाली बी माने बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ओके जानि होछि ताले रिजल्टेंट ता कहा भीतर वैल्यू वैरी करिवो ना ए माइनस बी रु ए प्लस बी पर्यंत से एग्जांपल को देखिले रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड कहा का भीतर रहइबो ना 4 माइनस 3 रु 4 प्लस 3 पर्यंत ता माने 1 रु 7 पर्यंत ओके जानि परछो ताले इथु भी तमे जानि परलो दीटा वेक्टर जदी मैग्नीट्यूड देइथिबो ताले तमरे मैक्सिमम रिजल्टेंट केते हबो तमे जानि गलो a प्लस b दिटा मिसई देबो मिनिमम रिजल्टेंट केते हबो सेटा भी तमे जानि गलो मो क्वेश्चन देबी माइंड इट गोटे गोटे शब्द मोर ठीक से सुनुथुओ नोट डाउन करथुओ नले सेठी थिबो क्वेश्चन तो आंसर करि बनथुओ हला तो तमे फंडामेंटली बुझो जेते थर परछ वीडियो देखो किंतु गोटे गोटे वर्ड बन रखियो ठीक अछि सो ताले गोटे ज्योमेट्रिक एडिशन हम जानि गले नेक्स्ट पॉइंट मु डाकुची लिखो वेक्टर कंपोजिशन is commutative in nature vector composition is commutative in nature or vector composition obeys the law of commutation केमिति so vector composition obeys commutative law that means vector A plus vector B equal to vector B plus vector A equal to the same resultant है ना either A vector में B vector add करा जाओ कि बी वेक्टर ए वेक्टर ऐड करा जाऊ रिजल्टेंट सेम रहइबो एटा होची वेक्टर गोटे इंपोर्टेंट लॉ वेक्टर कम्यूटेशन रूल बुझिला ताले सब वेक्टर ए कम्यूटेशन रूल को मानिबे नॉल सेवन वेक्टर हे परिबे ओके ताले ए जो वेक्टर कंपोजिशन विषय हम एते कथा जानिले से वेक्टर कंपोजिशन केमिति वेक्टर कंपोजिशन होय ठीक अछि ताले मो टिके प्रथम टिके रिकॉल कर दउची सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स एटा ଗୋଟେ प्रोसेस जोतरे हमें दुटा के बाद वेक्टर रो रिजल्टेंट बाहर कर परिबा सेकंड जो वेक्टर माने ऐड होती तांको कंपोनेंट्स को जाए रिजल्ट रे जो वेक्टर ता बाहर नवा वेक्टर ता ताको रिजल्टेंट को जाए ठीक अछि थर्ड एटा गोटे ज्योमेट्रिक प्रोसेस एटा अलजेब्राइक प्रोसेस नो
अल्जेब्रिक एडिशन ने सब गोटे रिजल्ट हुए 3 + 4 ऑलवेज 7 किंतु ज्योमेट्रिक एडिशन ने 3 + 4 सब 7 नुह 5 भी हो पारिबो 1 भी हो पारिबो 7 भी हो पारिबो जे कोनोसी वैल्यू हो पारिबो डिपेंड करे थीटा रो वैल्यू ऊपर हैला। नेक्स्ट रिजल्टेंट रो मैक्सिमम वैल्यू होची a + b रिजल्टेंट रो मिनिमम वैल्यू होची a - b मन रखो रिजल्टेंट रो मैक्सिमम वैल्यू होची a + b रिजल्टेंट रो मिनिमम वैल्यू होची a - b ता माने a - b रु a + b भीतरे समस्त वैल्यू हे परिबो इंक्लूडिंग a - b एंड a + b a - b भी होबो जोटा मिनिमम a + b भी होबो जोटा मैक्सिमम ता मध्ये जेते वैल्यू छथि समस्त हे परिबे तने असंख्य वैल्यू हे परिबो रिजल्टेंट रो एटा होची ज्योमेट्रिक प्रोसेस रो मीनिंग। नेक्स्ट वेक्टर कंपोजिशन दा कम्यूटेटिव रूल को बा लॉ को माने क्रम विनिमय क्रम ऊपर जो कंपोजिशन डिपेंड करे नाही आइदर ए सहित बी ऐड हो कि बी सहित ए ऐड हो रिजल्ट रे सेम रिजल्ट ही बाहर। ओके तले हमें एबे पढ़िबा कंपोजिशन कैरी आउट केमती हुए ना ये जो प्रोसेस को गवर्न करिया पई तीनटा बेसिक लॉ अछि। There are 3 basic laws to govern vector composition। ठीक अच्छे सो फर्स्ट लॉ होची ट्रायंगल लॉ। applicable in finding resultant of 2 vectors in same order। दीटा वेक्टर सेम ऑर्डर रे थिले हला रिजल्टेंट बाहर करिया पे हमें कहा पर डिपेंड करिया ट्रायंगल लॉ। 2 पैरेललोग्राम लॉ ये सब वाइटल लॉ एटा applicable in finding resultant of 2 co-initial vectors। Mind it, co-initial 2 co-initial vector। थर्ड polygon law used to find resultant of a number of vectors। ताले वेक्टर कंपोजिशन प्रोसेस को तीनटा बेसिक लॉ गवर्न करती बा मैनिपुलेट करती मैनेज करती से तीनटा लॉ है ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ पॉलीगन लॉ। ओके ताले गोटे लॉ तो सफिशिएंट था तीनटा लॉ कोन पे अछि ना एडी तीनटा डिफरेंट कंडीशंस अछि तीनटा डिफरेंट कंडीशन नै कि तीनटा डिफरेंट लॉ। ओके सेमती नाही जे तमे रैंडमली जो लॉ जोटी नै पके दो सेमती तो गोटे लॉ देता
बुझिपारछ सो ट्रायंगल लो कोठी एप्लीकेबल हुए ना एप्लीकेबल इन फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर दुईटी वेक्टर थिबे एई पटे देखो मु ताको फिगर कहूची दुईटी वेक्टर थिबे सेम ऑर्डर रे थिबे ताहले रिजल्टेंट बाहरिबो ट्रायंगल लो जोगे देखो ए और बी सेम ऑर्डर अछंती तेणु रिजल्टेंट बाहरला पैरेललोग्राम लॉ एबे कोठी एप्लीकेबल ना एटा एप्लीकेबल होबो जोटी टू कोइनिशियल वेक्टर थिबे कोइनिशियल माने कोन कहितली कॉमन पॉइंट रु बाहर थिबा हला गोटिए बिंदु रु बाहर थिबा फॉर एग्जांपल एटा गोटे वेक्टर Now, suppose one is A, other is B. ये कोई निशान नहीं गोटे पॉइंट बाहर चल देखो दीटा वेक्टर गोटे पॉइंट बाहर चलते तेणु कोई निशान दीटा कोई निशान वेक्टर थिले रिजल्टेंट को प्रोसेस रे बाहरिबो पैरेललोग्राम लो मन रख चित्र भी दउची मु पॉलीगॉन लो जदी दुईटी वेक्टर आ नथिबे दुईटा वेक्टर रिजल्टेंट पाई ए दीटा लो सेम ऑर्डर थिले एंती कोई निशान थिले एटा पडियो किन जदी दुई रो अधिका वेक्टर थिबे सेठी ना ट्रायंगल लो पैरेललोग्राम लो सेठी पॉलीगॉन लो अप्लाई करे पडिबो जदी ओ पॉलीगॉन लो ट्रायंगल लो रो कॉन्सिक्वेंस माने यार ए वेक्टर कोटे माने एडवांस फॉर्म का होचे हां बारंबार पैरेलल जो ट्रायंगल अप्लाई हेले पॉलीगॉन लो हुए और देखो ताले एठी एकाधिक वेक्टर थिबे सपोज गोटे ए एटा बी सी डी ताले एठी रिजल्टेंट पॉलीगॉन लो रे बारी हला दुई नंगे अधिका एठी चारटा अछंती ए बी सी डी चारटा वेक्टर रिजल्टेंट बारी पे यूज हला ओके जानियला ताले वेक्टर कंपोजिशन ने तीनटा लो ट्रायंगल लो पैरेललोग्राम लो ए पॉलीगॉन लो तीनटा भिन्न भिन्न सिचुएशन ने कोन अप्लाई होती ओके अच्छा ताले नेक्स्ट क्लास रे हमें ट्रायंगल लो डिस्कशन करिया ठीक अच्छे देखो पिला मन रख ट्रायंगल रो दीटा पार्ट अच्छे गोटे हूँ ग्राफिकल पार्ट और गोटे एनालिटिकल पार्ट बुझिपार ग्राफिकल माने चित्र साहाय्य एक्सप्लेन करिए ट्रायंगल को तापर हमें एनालिटिकली मैथमेटिकली तार रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय करिए ठीक अच्छे पैरेललोग्राम रो से भला ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड अच्छे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम रो एनालिटिकल मेथड मु एका भला प्रूव करी तेणु गोटा प्रूव करी आ गोटा छाड़ देवी तम ऊपर पूरा चित्र पॉइंट्स डेरिवेशन सबू सेम ओके ताले ट्रायंगल लो रे मु तार ग्राफिकल कहबी एनालिटिकल कहि देबी पैरेललोग्राम लो रो ग्राफिकल कहि देबी स्पेशल केस पळेबी आ एनालिटिकल कहबी चित्र रे कहि देबी ओके ताले नेक्स्ट क्लास रे हम ए दिटा लो ऊपर डिटेल्स रे कोन डिस्कशन करिया ओके थैंक यू